All right. So in future, nobody will buy newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement? Now आपने लिखा है कि जी after some time, तो मैंने इस statement को replace किया है with in coming days, but मैं यहाँ वो कह रहा हूँ कि this phrase is not completely wrong, but I think better phrase would be in coming days. People will replace printed media with electronic media. अच्छा आपने साथ लिखा था कि जी पीपल विल रिप्लेस प्रिंटेड मीडिया विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सो आई एम सेइंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया itself is not free of cost because it is a medium that you are using to get things. Okay, on the contrary, the things which are being provided on these platforms are kind of free. Okay, there are uh, like if we look in look at it narrowly and more precisely, I would say like a lot of material which is being published on electronic media, including books, articles, and recorded material, video recorded material. So a lot of the stuff is not free. Okay, so to say that you know nobody will buy newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying, so that is not necessarily true. You also have to this keep this in mind. So but you said like it will replace printed media with electronic media as it is free of cost. Media itself is not free of cost. Yeah, a lot of material which is being offered on this platform can be accessed freely, okay, without paying anything. So that is the point I'm trying to make. I will offer reading material like books and newspapers free of cost. Okay, so it would make like better sense. The culture of literature, yeah, we had a discussion regarding the culture of literature. So I would say not the culture of literature. It's not a better phrase. So you actually want to say that the trend we have where we offer literature in hard form, that would end. Okay, so that is what you're trying to say. So instead of saying like culture, it would be better if you use the word of it would be better if you use the word trend. Okay, the trend of hard form of hard form of literature will be destroyed completely. I think destroyed is a kind of like harsh word. uh like better to use will end completely. Okay, that would be better. Okay, so people get attracted to online stuff due to the increasing I corrected it, due to the increasing popularity of electronic devices. I disagree with this idea that people and the trend of books and newspapers the people and the trend of books and newspapers just to follow the word. Uh, so your proposition, your opinion here is that you think that people are ending this trend of reading books in hard form because they are following another popular trend in the world, which is to you know use your gadgets to read and to get stuff online. Okay, so you think that that is wrong. I disagree with this idea that that the people and the trend of books, I think just to follow the word is kind of very broad way of putting it. I think थोड़ा सा specific होना चाहिए आपको, अगर आप अपना पॉइंट ये देना चाह रही हैं कि जी, और फिर आप ये कह रही हैं कि आप डिसएग्री कर रही हैं इस तरीके से, वो तो ठीक है। व्हाई आर यू डिसएग्रीइंग, ये आपने नहीं बताया ना। तो आपने अपना ओपिनियन दे तो दिया, बट आपने उसकी रीजन स्टेट नहीं की। तो आप जब तक अपनी रीजन स्टेट नहीं करेंगी ना, उस वक्त तक आपका जो ये थीसिस स्टेटमेंट है दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड कंप्लीट। ठीक है ना। तो पहले तो ये कि बेहतर है कि इसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाए ना, इस चीज को, इस बात को। ठीक है, तो आप ये कह सकती हैं आई एग्री विद दिस आइडिया ऑफ पीपल
giving up, not ending is not like giving up. Giving up the trend of, no, not the trend of like giving up reading books. Newspapers. Reading books and newspapers. And shifting their focus because on the reading material available online for free. Now अब यहाँ पे आप बताएंगे why, because, राइट, ठीक है। सो ये अब आगे आपका पॉइंट्स आ जाएंगे। जी मुकाबिल आपको बात समझ में आई है? आई थिंक इट्स अ बिट बेटर अगर आप इसको इस तरह से लिखें। इन कमिंग डेज people will replace printed media with electronic media as it will offer reading material like books and newspapers free of cost. The trend of hard form of literature will be destroyed completely. People will get attracted towards online stuff due to the increasing popularity of electronic devices. I disagree with this idea of people giving up reading books and newspapers and shifting their focus on the reading material available online for free because. All right? जी मुकाबिल, make sense? आगे चलते हैं। Yes, sir. So the books and newspapers are considered to be the old-fashioned source of information. बाब अपने बॉडी पैरा पे आ गई है। To be the old-fashioned source of information. So humans by nature always prefer prefer change in their lives. I would look like, see, if you look at this statement you have made here, the books and newspaper are considered to be the old-fashioned source of information. Now, this statement of yours should have been the topic statement, okay, where you should have introduced the actual idea which you're going to argue in this paragraph. Okay, so like, but that idea is not there. It's a statement. The books and newspapers are considered to be the old-fashioned source of information. Like, is this the point you want to argue in this, in this paragraph? आप देखिए, Yes, थोड़ा सा sir. आप थोड़ा सा आप इसके ऊपर बैक जाएं, अपने रेफर बैक किया करें अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लोग जो है न्यूज़पेपर्स नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना, और वो जो है ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो डू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट? और आप कह रही हैं कि जी I disagree with this idea of people giving up reading books and newspapers and shifting their focus on the reading material available online for free because अब ये आपके पॉइंट्स चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिलीनिएटेड नहीं है, so that kinds of creates confusion, a mystery, ठीक है ना। एक तो बात ये, और दूसरी चीज ये है कि द बुक्स एंड, अब आप यहाँ पे आपने जो है ना वो क्लियरली जो है वो बताना था कि जी क्यों आप डिसएग्री कर रही हैं इस पॉइंट से, ठीक है। तो अगर आप ये कहें जी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स आर कंसीडर्ड टू बी द ओल्ड फैशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो अगर आप देखें, आप यहाँ कह रही हैं जी मैं डिसएग्री कर रही हूँ, बट यू आर काइंड ऑफ एग्रीइंग विद दिस कि दैट पीपल
shifting their focus from reading books and newspapers in hard form towards reading the stuff in short form. That is a good thing because आपने यहाँ पे खुद कह दिया कि जी they are old fashioned source of information. ठीक है. तो अगर आपने अपनी आइडिया को जो आपने अपना ओपिनियन वहां पे पुट किया है कि जी यू डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, अगर आपने वो करना है तो आपको अपना यहाँ पे जो टॉपिक स्टेटमेंट है आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. या अगर आप इसी आइडिया को लेकर चलना चाहती हैं तो आप इस तरह कह सकती हैं दो बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स आर कंसीडर्ड टू बी द ओल्ड फैशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन येट. फिर आप उसमें एक जो कंट्रास्टिंग आइडिया वो डालें और उसको आप अपना आर्ग्यूबल पॉइंट बनाएं. ये तो आपका जो आप पॉइंट बना रही हैं बेसिकली इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्टांस यू आर टेकिंग इन दिस एसे. कबीर आपको बात समझ में आई है? जी सर। ठीक है. अच्छा, चलिए अब आपने एक आर्ग्यूबल पॉइंट दिया जो कि आई इन माय ओपिनियन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, अगर इवन इन द फेवर ऑफ ऐसे अगर एग्रीमेंट में भी आप लिखें तभी. ठीक है, बट लेट्स टेक इट एज योर टॉपिक स्टेटमेंट. फिर आप आगे एक और आर्ग्यूबल पॉइंट दे रही हैं कि ह्यूमंस बाय नेचर ऑलवेज प्रेफर चेंज इन देयर लाइव्स. आई थिंक इट्स लाइक क्वाइट आर्ग्यूएबल. ठीक है. Like there are people who do not prefer change in their life. Okay. So instead of relying on printed media, most of the people prefer to use advanced ways to meet their literary needs. Okay. So by nature, always prefer changing their lives. So instead of relying on printed media, most of the people prefer to use advanced ways to meet their literary needs. Due to this reflection of people, I think due to this reflection, like due to this reflection of people, इसका क्या मतलब बन रहा है? Okay. ये it doesn't make sense. The golden era of books and newspaper will be एक तो will be नहीं आएगा, will end after the successful time. I don't think this is needed. Will end just. ठीक है. स्टिल अब आपने देखें पूरा पैराग्राफ आपने अपने पॉइंट के अगेंस्ट लिखा है. सो तो ये एक चीज जो है ना वो आपके अगेंस्ट जाएगी. एक तो बात ये होगी. दूसरी आपने ये जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी है ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स, अब ये कह सकती हैं कि जी ड्यू टू दिस, आप ये कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग अपॉन. अब लेकिन अगर मैं इसको बनाऊं जो आप कुछ बनाना चाहें मैं ये क्लू कह सकता हूँ जी रिफ्लेक्टिंग, सॉरी, ह्यूमन, दिस कॉमन ह्यूमन बिहेवियर या दिस कॉमन बिहेवियर ऑफ द पीपल, बिहेवियर ऑफ द पीपल इसमें आई बिलीव it can be said that the golden era of books and newspapers will end. ठीक है. ये कि मैंने ये सेंटेंस बना दिया है बट इट डजंट मीन कि ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस है इन द कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से आप अपनी आइडिया को लेकर चल रही हैं. तो आपने जो सेंटेंस बनाया हुआ था मैंने सिर्फ उसे एक शेप दिया है, अंडरस्टैंडेबल शेप दी, क्योंकि जो आपने इस सेंटेंस बनाया हुआ था वो सेंस नहीं दे रहा था. ठीक हो गया. The books and newspapers are considered to be the old-fashioned source of information. Humans by nature always prefer change in their lives. ठीक है. So instead of relying on printed media, I would give you one thing. There is an improvement uh, if we compare this to
योर प्रीवियस ऐसे कि आपने ये आइडिया फिर भी बेहतर डेवलप किया है, ठीक है ना। ये आई वुड से कि ये मतलब बुरा है, ठीक है, इट्स देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बट ये कि आई थिंक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, हम डाइग्रेस कर गए टॉपिक से। बट नाउ डेज डोंट स्टार्ट योर सेंटेंस विद बट, okay, just say nowadays. If you really want to say no, but say however, okay, that is a connector, much better connector, which can be like used at the start of the sentence, okay. However, nowadays you can use this one, okay, then it will be fine. Please nowadays go there. Nowadays individuals, comma, individuals seek information from नहीं आएगा यहाँ पे, online websites, okay, all right, from आएगा, instead of wasting money on buying books. बट इसमें ना आप ये बात कह सकती हैं, एक आइडियाज को थोड़ा सा ना डेवलप करें। आप कह रही हैं कि इंडिविजुअल सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन बाइंग बुक्स। Look, it is already been stated in the premise in your prompt that they are not spending money. So that is out of question. The thing is, you have to tell why they are not spending money. That is the point. So if you are stating the point, if you are making the point which has already been established, so what good you are doing to that say? ठीक है ना? The question is why they are not spending money. So you can say like individuals seek information uh, from online websites uh, from I think this collocation online websites. I think websites are online. You do not need to put the word online here. Either use word online or use word websites. I think that would be better. So the individual seeing information online. Okay. From yeah, you can say like from websites. I would put comma here. I would say that from websites and and other educational other social media platforms. Let's say social media platforms are these days a big source of information. Social media platforms instead of wasting money on buying books. Now, I'll give you the reason. Because because they want to get the latest information. Either you can latest available information regarding a topic information. Okay, either you can say this, or you can also say that because because information written or available in books is usually outdated. It can also be made, but I would go with the other one, the one which I wrote before. Okay, because they want to get. You can also write this. सर मैं लीव कर सकता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। माफ करिए। चलिए चलिए वहाँ, वैसे मैं आपको आज आपके साथ काम करना चाह रहा था। ओके, आप जाएं, कोई इशू नहीं है, हम कल कर लेते हैं, नो वरीज, राइट। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्लाह। Instead of wasting money on buying books because the information available in books is usually outdated. ओके, या तो आप ये लिख दें या फिर आप ये लिख दें कि जी ये because they want get the latest available
अब ये देखे ना, ये एक आर्ग्यूबल पॉइंट है विच यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन मेक केस फॉर, ठीक है ना। तो अब ये जो है वो डिफरेंट है आपके ये इस बात से कि जी वो पैसे नहीं देना चाह रहे सिर्फ, ठीक है ना। आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाई डू नॉट दे वांट टू पे फॉर द स्टफ। अगेन आपने सेंटेंस बट से स्टार्ट किया, डोंट डू दैट। कि बुक्स आर द ओनली मेन सोर्स ऑफ डेटा, डोंट यूज ओके राइट। Books are the only main source of data which we can keep with ourselves. Okay, books can be used as evidence as well. The modern technology is an addictive thing which can affect badly on the health of a person. The habit of reading online not only affects the mental health, it also affects, you're starting another point here to better add a connector here additionally. Okay. The habit of reading online not only affects the mental health, it affects the part of body which gets affected by the use of electronic media is the eyes. The muscles of eyes weakens and results in issue. Look, but the thing is, on the surface it seems plausible, but you see, यू कैन नॉट प्रूव दिस। मतलब आप ये बात कितनी अथेंटिसिटी किसी के साथ कह सकती है ना कि जी ऐसे होता है ऐसे होता है। आप कह रही थे मसल्स ऑफ आईज वीकन्स एंड रिजल्ट्स इन आई इश्यूज ऑफ आई साइट। तो इस तरह की बात ना करें कि जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अबूर नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने बात की, द पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच गेट्स अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज द आईज। अगेन ये इसको जस्टिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नॉर्मली आपके पास इसको जस्टिफाई करने के लिए अथेंटिक नॉलेज ही नहीं होती ना। आप या तो फिर आप उसमें कह लें, इसको थोड़ा सा उस पर ले जाएं, लाइट के ऊपर ले जाएं, बिकॉज उसके ऊपर एक एम्पल एम्पल डेटा मौजूद है। आप उसका हवाला दे सकती हैं कि जो आपकी ये ब्लू लाइट होती है, ठीक है ना, दैट अफेक्ट्स योर आई साइट, ठीक है ना। सो थोड़ा सा फिर बात अगर आपने इस तरफ लेके जानी है तो फिर आपने बात थोड़ी एविडेंस से करनी है, ठीक है ना। Numerous researches have shown that extensive use of blue light affects the eyesight के, स्पेशली इन यंग किड्स। इस तरह से आपने बात बना के जस्टिफाई करनी है अगर आप ये पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। सिर्फ ये कह देना जी मसल्स ऑफ आईज वीकन्स रिजल्ट्स इन द इश्यूज ऑफ आई साइट, आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ। The books are most authentic source of knowledge, as these are mostly written by scholars, but the stuff which we consume online is uploaded by random persons. We cannot justify whether the piece of information is correct or not. Okay, the conclusion of this essay is that the books are the most suitable thing to seek knowledge because it has so many benefits. अब देखें, अब आपने कहा था ना आई डिसएग्री, अगर आप डिसएग्री कर रही हैं, एक तो पहला पॉइंट आपने जो है वो ये वाला पॉइंट आपने एग्रीमेंट में लिख दिया, ठीक है। और दूसरा आप ये पॉइंट आप डिसएग्रीमेंट में लिख रही हैं, लेकिन देखें क्या कर रही हैं आप जिसमें इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन बाइंग बुक्स, आपने लिखा था ना। ठीक है, अब आप कह रही है कि लोग जो है ना वेबसाइट्स के ऊपर पैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और पैसे जाया नहीं करते किताबों के ऊपर। अब ये बात कर रही हैं आप, तो आप इन अ सेंस अपना जो आपने स्टांस लिया था कि आई डिसएग्री, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसके खिलाफ ही लिख रही हैं, ठीक है। और चलें, अब आपने चले खिलाफ लिख लिया, ओके कोई बात नहीं, आपका टॉपिक सेंटेंस वो हो गया। लेकिन जब आपने आगे एक्सप्लेनेशन की तो आपकी एक्सप्लेनेशन आपके टॉपिक सेंटेंस से डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप अपनी एक्सप्लेनेशन में जो बेसिकली अपने जो आपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर स्टांस लिया था उसको आपने कैरी करना शुरू कर दिया कि जी बुक्स आर दी ओनली मेन सोर्स ऑफ डेटा विच वी कैन कीप विद आवरसेल्व्स, ठीक है। दो अगेन ये भी ये इटसेल्फ ये आर्गुमेंटेटिव पॉइंट है। देखिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ना यूज किया करें ना, ऐसे ओनली का वर्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आप सिंपली कह लें बुक्स आर ए सोर्स ऑफ डेटा कर लें, ठीक है ना। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है ना। विच अब तो ये फेयरली प्लॉजिबल पॉइंट हो जाता है ना। आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो पॉइंट आर्ग्यूबल बन जाएगा, ठीक है। डेटा विच वी कैन कीप विद आवरसेल्व्स, books can be used as evidence as well. Fine, modern technologies is an addictive thing which can affect badly on the health of a person. All right, ठीक है।
ये एडिशनली वाला पॉइंट बेसिकली मेरे ख्याल है पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि आपने दूसरा पॉइंट स्टार्ट किया ना, वो वहीं से स्टार्ट कर दिया था आपने, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप अनदर पॉइंट अगर ऐड कर रही है तो ठीक है, दैट इज फाइन। अच्छा, मैं सिर्फ ना, हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो मैं सिर्फ कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। तो कंक्लूजन ऑफ दिस एसे इज दैट बुक्स आर मोस्ट सुटेबल थिंग टू सीक नॉलेज बिकॉज इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स। देखिए, दैट इज फाइन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ समरी एंड कंक्लूजन, दो पॉइंट्स लिख दें इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस, यानी कि फ्रेज कहते हैं लाइक 3-4 वर्ड्स को ना, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस आप दो पॉइंट्स यहाँ पे लिख दें कि वो बेनिफिट्स कौन से। तो क्या होगा कि आपका जो ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, इट वुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है जी मुकाबिर, आज हमने ना बड़ी डिटेल डिस्कशन की आपके ऐसे के ऊपर, जो कि आई थिंक पिछले 2-3 दिनों से नहीं हो सकी थी। तो होपफुली ये चीज़ों ने सेंस बनाई होगी। स्टिल इफ देयर इज कंफ्यूजन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। जी पूछें, कोई बात है तो पूछें, ना फिर हम सेशन एंड करते हैं। नहीं और कुछ, बस ठीक है। ऑलराइट, ग्रेट, फाइन। सो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।